welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कियारा अडवाणी ने किसके साथ अपनी न्यू फिल्म की शुरुआत? शिल्पा शेट्टी ने किया गणपति बाप्पा को वेलकम. क्यों सैफ अली खान को लगता है धर्म से डर? मैडम नहीं मिला गणपति बप्पा चलिए आप चल थोड़ा साइड दे दो थोड़ा साइड दे दो सर. सर भाई चलना सर थोड़ा साइड दे दो. शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के जेल में रहते हुए गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का लिया फैसला. शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम से अपने घर पर गणपति बाप्पा को किया वेलकम. शिल्पा शेट्टी के चेहरे पर लौटी मुस्कुराहट. क्या शिल्पा शेट्टी ने सिचुएशन से पूरी तरह से कर लिया है समझौता? हाथ निभाओ. शिल्पा जी मोरिया रवि थोड़ा टर्न हो जाइए. शिल्पा जी थोड़ा सा पीछे दादा प्लीज. शिल्पा मैम. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल धूमधाम से गणपति बाप्पा को अपने घर पर वेलकम करती हैं और अपने पूरे परिवार के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं. लेकिन इस साल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अलेज्ड एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में जेल में बंद हैं. ऐसे में स्पेकुलेशंस हो रही थी क्या शिल्पा शेट्टी अपने घर इस साल गणपति बाप्पा को लाएंगी. बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद शिल्पा शेट्टी मीडिया अटेंशन अवॉइड करने के लिए गणपति बाप्पा को अपने घर ना लाएं. लेकिन सबको गलत ठहराते हुए शिल्पा शेट्टी पूरे जोशो खरोश के साथ गणपति बाप्पा को अपने घर पर वेलकम करती हुई दिखी. शिल्पा शेट्टी के चेहरे पर दिखी स्माइल और वो पैप्स को फेस करते हुए काफी कॉन्फिडेंट नजर आई. मैडम नहीं मिला गणपति बप्पा चलिए आप चल थोड़ा साइड दे दो थोड़ा साइड दे दो सर. सर भाई चलना सर थोड़ा साइड दे दो. इसका मतलब साफ है कि शिल्पा शेट्टी ने अपनी लाइफ में पूरी तरह से मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है. वैसे गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है. ऐसे में शिल्पा शेट्टी भी यही होप करेंगी कि अपने आगमन से गणपति बाप्पा इस बार उनके सारे दुख तकलीफों से उन्हें छुटकारा दिलवाएं. वैसे कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई हैं कि शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा से सेपरेट हो सकती हैं. यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शेट्टी मन बना चुकी हैं कि राज कुंद्रा के पैसों से उनका लेना देना नहीं होगा और वो अपने बच्चों के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करेंगी. यही नहीं, शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंडस्ट्री फ्रेंड्स से कहा है कि शी इज ओपन टू वर्क. और रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि फिल्म मेकर्स लाइक अनुराग बासु और प्रियदर्शन ने शिल्पा शेट्टी को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में लेने का फैसला भी कर लिया है. शिल्पा शेट्टी की मुश्किल की घड़ी जल्द ही खत्म हो जाएगी क्योंकि अब वो गणपति बाप्पा को अपने घर ला चुकी हैं. चलिए आप चल थोड़ा साइड. बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की जगह किस एक्टर के साथ कियारा अडवाणी की पिक्चर हुई वायरल? कियारा अडवाणी ने खुद इस एक्टर के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर्स की पोस्ट. कियारा अडवाणी की न्यू इनिंग्स को फैंस का मिला पूरा सपोर्ट. एक्ट्रेस कियारा अडवाणी फिल्म शेरशाह की सक्सेस के बाद हैं 7वें आसमान पर और रिसेंटली कियारा अडवाणी ने अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म SVC 50 की शूटिंग को किया स्टार्ट इन प्रेजेंस ऑफ रणवीर सिंह, चिरंजीवी और SS राजामौली. जी हाँ, हैदराबाद में इन स्टार्स की मौजूदगी में SVC 50 की शूटिंग शुरू हुई जिसमें कियारा अडवाणी के साथ रामचरण नजर आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्टर शंकर करेंगे डायरेक्ट.
और इस फिल्म के लॉन्च पर रणवीर सिंह की मौजूदगी सबको कर गई थोड़ा हैरान। लेकिन आपको बता दें, ये कनेक्शन कियारा अडवाणी और रणवीर सिंह का नहीं, बल्कि रणवीर सिंह और डायरेक्टर शंकर का है, जिनके साथ रणवीर सिंह ने हाल ही में एक पिक्चर साइन की है। वो बात अलग है कि रणवीर सिंह की ये फिल्म कॉपीराइट कंट्रोवर्सी में फंस गई है। कियारा अडवाणी ने अपने इस नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की सारी पिक्चर्स को शेयर करते हुए लिखा, एक्साइटमेंट लेवल बियॉन्ड फॉर माई फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म। My heart is filled with gratitude to be directed by the one and only Shanmugham Shankar Garu and my absolutely wonderful friend and co-star at Always Ram Charan. Produced by #Dilraju Garu. With your blessings, love and good wishes, our film has begun. और इस फिल्म के लॉन्च पर एक बात इंटरेस्टिंग नजर आई है कि यहाँ फिल्म के क्रू से लेकर स्टार्स ऑल ब्लैक अवतार में आए नजर। इवन कियारा अडवाणी ब्लैक सूट और ब्लैक टाई में नजर आ रही हैं सुपर सेक्सी। वहीं रणवीर सिंह भी अपने ब्लू कलर के सूट में दिख रहे थे डैपर। वैसे रणवीर सिंह के इसी लुक की वजह से हाल ही में नेटिजन्स ने उनका काफी मजाक बनाया था। वैसे फिल्म के कास्ट एंड क्रू के इस ऑल ब्लैक अवतार का कनेक्शन इस फिल्म से है, क्योंकि रामचरण ने फिल्म के जिस पोस्टर को अनवेल किया है उसमें हर कोई ऑल ब्लैक अवतार में नजर आ रहा है। और इस पोस्टर को शेयर करते हुए रामचरण ने लिखा, टू न्यू बिगिनिंग्स, #RC15, #SVC50, kick starts today, looking forward to deliver a memorable experience to one and all. Well, कियारा अडवाणी पिछले कुछ वक्त में बॉलीवुड से लेकर डाउन साउथ काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं, और जिस तरह वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रही हैं, इन नो टाइम वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की पोजीशन को हासिल कर लेंगी। सैफ अली खान ने कहा उन्हें धर्म से लगता है डर। सैफ अली खान ने कहा वो रियल लाइफ में है एग्नोस्टिक। सैफ अली खान ने कहा किसका गॉड है बेहतर, इस कंपैरिजन से होता है दुख। सैफ अली खान ने रिलीजन को लेकर की खुलकर बात। एक्टर्स जनरली अपने बिलीफ और रिलीजन को लेकर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन बोल्ड एंड बिंदास सैफ अली खान ने अपनी फिल्म भूत पुलिस के प्रमोशंस के दौरान रिलीजन और बिलीफ से जुड़े सवालों का खुलकर दिया जवाब। सैफ अली खान ने अपने बिलीफ को लेकर कहा, आई एम एग्नोस्टिक इन रियल लाइफ। आई एम वेरी सेक्युलर इन द सेंस दैट आई थिंक टू मच रिलीजन वरीज मी बिकॉज दे पुट एन एम्फेसिस ऑन द आफ्टर लाइफ एंड नॉट इनफ एम्फेसिस ऑन दिस लाइफ। सैफ अली खान ने कहा उन्हें रिलीजन के इस बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। I find too much of religion to be an organization and too many problems associated with basically my God or your God or whose God is better. सैफ अली खान का कहना है वो रिलीजियस उस तरीके से हैं जिसमें उन्हें लगता है कि एक हायर पावर है, लेकिन वो क्या पावर है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। सैफ अली खान का कहना है, I pray and I try to focus on my own energy on things. I'm more spiritual. यानी सैफ अली खान का साफ कहना है कि रिलीजन की तरफ उनका एक बिल्कुल अलग नजरिया है। वैसे सैफ अली खान फिल्म भूत पुलिस में एक गोस्ट हंटर का रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने इस खास रोल को चुनने के अपने फैसले को लेकर कहा, Something has to grab you that you would want to be part of the whole process. When you hear a story or when you read a script, you visualize the movie in a way and you think, is this what I wanted to do? This is one of the better scripts that I have read. There's more depth to it than I can think people would expect and it is a really interesting film. साथ ही सैफ अली खान ने कहा ये फिल्म काफी ज्यादा डिमांडिंग थी और इस फिल्म को करके उन्हें मजा तो आया, लेकिन ये था एक काफी टायरिंग प्रोसेस। This film is on location, very dramatic. There's a lot of things going on and I remember being very, very tired. Very often, even though I enjoyed it every day, but it was tiring. Well, सैफ अली खान की ये फिल्म अब प्रीपोन कर दी गई है और ये एक OTT प्लेटफॉर्म पर 10 सितंबर को रिलीज होने जा रही है।
मेहता का उल्टा चश्मा का टप्पू बबीता जी को कर रहा है डेट। मुनमुन दत्ता अपने से 9 साल छोटे टप्पू AKA राज आनंदकट को कर रही हैं डेट। टप्पू और बबीता जी का ये रिश्ता है काफी पुराना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रील और रियल लाइफ का शॉकिंग रिलेशन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में कौन नहीं जानता। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो है और इस शो के 3000 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं। यही वजह है कि शो के हर एक कैरेक्टर को भी जनता अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अब रिपोर्ट्स आई हैं कि इस शो में टप्पू का रोल प्ले करने वाले राज आनंदकट इसी शो में उनकी आंटी का रोल प्ले करने वाली बबीता जी AKA मुनमुन दत्ता को डेट कर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता जी और टप्पू का ये रिश्ता नया नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से डेट कर रहे हैं और यहाँ तक कि इनकी फैमिलीज को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता है। रिपोर्टेडली शो के इनके को-स्टार्स को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन कोई इन्हें इसे लेकर टीज नहीं करता। वैसे कहा जा रहा है कि इनके रिलेशनशिप को दुनिया की नजरों से छिपे रहने की वजह ये है कि पहले तो काफी सारे लोगों को इनके रिलेशनशिप को मानने में नहीं हो रहा था यकीन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर टप्पू AKA राज आनंदकट बबीता जी से काफी इंटरैक्ट करते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के पोस्ट्स पर रिप्लाई करते हैं। वैसे इनके रिलेशनशिप की न्यूज वायरल होने के बाद जब इनसे इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो इन दोनों ने ही इस पर कमेंट नहीं करने का फैसला किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बेहद ही पॉपुलर शो है और इस शो से जुड़ी इस न्यूज पर फैंस का रिएक्शन जानना होगा काफी इंटरेस्टिंग। आप भी इस रिलेशनशिप को लेकर हमारे साथ अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। On the show, भूत पुलिस की कास्ट सैफ अली खान और अर्जुन कपूर ने किया जूम से कैंडिड इंटरैक्शन। It does make you angry when you think you're doing the right thing and you think you're a good guy for paying taxes and supplying entertainment and being a voice of reason when insane things are happening across the country and people are, spewing hate speeches and saying violent things and they're okay, but people are victimizing you for making a little sense about something. So how do you react to that? You don't react to that. You say, ooh, I'm in the Maldives with beautiful children, a beautiful wife, having a lovely glass of wine. Should I really care what a troll has to say about me? And the answer is usually no. He's got a process and he's got a knack of reacting to it. He'll give his own shot and he's a self-critical actor. He'll look at his own self after the cut and he'll be like, and we're all laughing and he'll be like, okay, if you're happy, are you sure? People have just appreciated the fact that the choices I made were more cinematic. Where, like I said, I wasn't in a situation where I was protecting something that is, like I'm the king of romance and the last have been 20 blockbusters and then the next one will be as well. I don't think enough people notice us as human beings from time to time because they have a phone in hand. They only want to capture us in that moment. That's the only thing I think. Hello everyone, I'm Radrani and welcome to Speak Easy. Today I have two wittiest men of the industry collaborating to ward off evil on screen. Have they managed to ward off evil off screen then? Do you believe in that kind of a thing? Warding off evil? I mean, various kinds, like a little bit of nazar, I think. You do that? I don't like putting black spots on my kids or something. And one had a dhaga for a while, but I think nazar utarna from time to time, not necessarily a bad thing. Evil eye maybe. You do that? There's energies, I feel. And there's bad energies and good energies. I don't give too long an answer, and Papa, you can jump in. Yeah, quickly. What about you, Arjun? No, I agree with Saif. I think you can't put a finger on it, but you can sense these things. So it's always warding off evil is just sometimes just protecting yourself. It's more about just making sure that. Sometimes if you put a finger on it, it's sensitive.
Don't start. Sorry. I'm just saying. I No, just no, had to- please start. It's fine. It's one of those things where you just have to let Saif do what he's going to do. No. With Saif, if he's in his element for that hour or two, then you know you're on a roll. For with the him. crash. Yeah. And then you're like, I want to go home and play with my kids. Okay, bye. Yeah. And we're at the we're We're at at the 4:30. cusp. We're at the cusp of it. Oh my God, I So must with quickly Bebo- end this. So with I'm Bebo, very terrified. You're I just want terrifying to tell me. you, with Bebo on Kiya and Ka, Saif, I had this joke. At 5 o'clock, the chappal used to come out. Really? And the Chappal chai out, the and rollers. chappal now. That means we have the last hour, and then she'll be like, she starts doing that eyes. There's nothing wrong with the eyes. She's now, because she's done. Time to go. So, Saif also has a chappal now at about 5 o'clock going on. He does that, like body pain or something starts. No. He just starts missing his children too much. That's a 7 p.m. that's- 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. So That's that's for her it's 5, for him it's 7. Okay, fair enough. Then I must You you have make some the time. best You got use. some You have 2.5 hours to do. You know, while Arjun, of course, is playing the straight-faced character and you're in your own element, you seem to bring out that camaraderie a lot, I think, with your male co-stars as well, and that's very rare, right? It's easy to say, talk about the chemistry you have with your female co-star, and I feel that's effortless. Okay, with I you. see where you're going, if I can Yeah. jump in. And I think I see where you're going. And I'm saying that's a really good thing Yeah. because of, it's an attitude, right? Sometimes you do a film that's only about you. Yeah. And then sometimes you do a film that's about various things. And sometimes it's about two people and their equation Yeah. and relationship. And if you can be lucky enough to have a generous and, team playing kind of co-star like Arjun, who is a film person, and that helps somewhere, that he's not some renegade who's out for personal glory constantly, Exactly. and you know when to share and when not to share. Yeah. You know, some people are like, I Renegade, want yeah. it all, right? I know, you want to be a renegade? You can be a renegade. No, I just like the word Yeah, suddenly. Yeah. like some people, so you got to know when, it's an attitude when you get Yeah. into a film. I've done a lot of two-hero films where it's time to just share. I think when any film, when you get into it, Yeah. you should know where your moment is, where it can be all about you and how much you have to share. And if you can get that into your head, it's an easier life. Arjun, it's a relief when when the co-star doesn't have that kind of ego or insecurity, isn't it? Which a lot of people still do, which is lesser now. I'm sure it's a relief where you can just focus on, making your part the best. I think I'm slightly fortunate in that sense. I've done a lot of ensembles. Even before coming into Bhoot Police, I did Aurangzeb as my second film, Gunde, where Yeah, I got yeah. Ranveer as my co-star, Finding Fanny, and you talk about not doing Bhoot Police. I've had Mubaraka for that matter. So I've had some kind of taste. Even Two States had an ensemble. I've had that taste, and I've realized that it depends on how you look at work. I can get insecure about him being really funny on set also, but if I forget the script and I say, oh shit, Saif is making everybody laugh, what am I doing in this scene? And I go and tell the director, hey, give me at least one funny line. Na? But my character is not that. When I signed on, sitting in the AC room, when I heard a narration, I committed to the fact that I am the straight-faced, honest, real character. He's the guy with the wit. Yeah. And mine is more the reactor that, oh God, we're in trouble, this guy's going to... Like, what do you do? I have to, I am the audience in that Yeah, sense. I'm correct. reacting to the sheer charade that Vibhuti puts up. I can't on set be saying, no, now I want two lines as funny, otherwise I'm not going to do the show. So you need to know why you do films. You need to know what your role is. You need to do it well. And of course, if you're not somebody who has that bandwidth, then you shouldn't do these films. Yeah. I think it's very important to know, and sometimes conflict is good, but then the script needs it in itself for you to have that friction and be okay. Yeah. If you're going to be playing off each other, you can't be showing up on set asking about ये line वो क्यों बोल रहा है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका वो shot extra क्यों लिया, इसका ये क्यों अलग से ले रहे हो, oh he's got an extra song, अच्छा then you're going to just caught up in all the wrong things and you're not making the film better. You're just trying to protect yourself. Yeah. And if that was the intent, then you shouldn't have signed the film, because you cannot protect yourself in an ensemble with all this. You can only protect it with what you do on set Yeah. as an actor, not this shenanigans. Does that make sense? That makes great sense, but it's a really nice thing for all of us to understand and remember, Yeah, it and is. for young people coming into movies, and it's really good advice generally. But it's been difficult, right? Because a person like you who says things with an intent that is honest and that is your side of the story often gets misconstrued to a level that it's, people are just going crazy over a statement that you make, especially when it comes to the kind of movies you've done or whether it's a series that offends them.
How have you been dealing with all of this? And for a series, getting you in trouble is a very important and frightening time for all actors to understand. That means tomorrow Arjun could technically get arrested because Saurav Shukla said something. That's insane. So technically, it's a Yeah. little worrying. So I mean, it's fine. I'm okay, and I think we're okay, and I don't think anything will happen. But it needs to be regulated, and we need to have laws in place so that we know when we're breaking the law or not breaking the law. You can't just have someone, arrest you or knock on your door because you said a certain line. And especially if you didn't even say the line. Unknowingly Actually, also. even if you said the line, my view is that an actor should not be responsible for what he says in a If you're script. playing a There should be character. a censor and a government body regulating these things.